तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज आम डिस्कसन करवा फ्रीडम जो इम्पोर्टान्स फ्रीडम अच्छी। तो ट्राए करवा ये वीडियो सब सारी देवाई बट फ्रीडम माने कौन? फ्रीडम माने होची माने देख कौन पे आमको दरकार फ्रीडम आउ देख मु बुझे दूसरी टी फ्रीडम कौन दरकार। सोशल इकोनॉमिक क्षेत्र में कल्चरल आइडेंटिटी सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट माने आमको सिक्योर करे जदि फ्रीडम हमको दे दी आमर अखंडता बजाय रखे स्टेट आउ सम्मान दिए इंडिविजुअल को आउ इंटीग्रिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को बजाय रखे माने सिक्योर करके रखे। मेकिंग द पीपुल रेस्पेक्ट द डिफरेंस इन व्यू फेथ एंड आइडियोलॉजी माने विभिन्न माने पीपुल एक्सपेक्ट एंड रेस्पेक्ट डिफरेंस व्यू माने दिशंती विश्वास करती विभिन्न आइडियोलॉजी को आउ एंजरिंग एवरी वन ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चॉइस एंड एंटरप्राइज माने सब फ्रीडम दे से तापने मत व्यस्त करें निज तापरे अपॉर्चुनिटी दिया जाइए एंजॉयमेंट राइट्स एंड फ्रीडम बाय ऑल द पीपुल तापरे फ्रीडम एक्सप्रेशन ऑफ ऑल्स माने समस्त को एक्सप्रेस कर प्रोटेक्टिंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ऑल्स तापरे एलिमिनेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑपरेशंस और लाइफ बेस्ड म्यूचुअल रेस्पेक्ट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी टॉलरेंस ये सब बजाय रखा। देखो आम बुझा ए डिफाइन लिमिट्स ऑफ फ्रीडम और हाउ टू डिटरमाइन व्हिच रेस्ट्रेंट इज रीजनेबल एंड नेसेसरी। तो कॉन्सेप्ट फ्रीडम डिमांड्स क्वेश्चन इज जज व्हिच रेस्ट्रेंट्स नीड व्हिच आर नॉट बेसिस रेस्ट्रेंट प्लेस ह्यूमन लिबर्टी फ्लोइंग द प्रोवाइड आंसर टू क्वेश्चन। 19th century रे while elaborately discussing the concept of freedom in his essay on liberty ब्रिटिश फिलोसोफर जॉन स्टुआर्ट मिल कही देखो टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी माने दुईटा कार्यकलाप सेल्फ रिगार्डिंग एक्टिविटी जोटा कि दोज एक्टिविटी हुई जार कंसर्न विथ इंडिविजुअल एलोन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन which concern and relates to other. Mill had there to be no restraints on this must be free from all restraints he observed over his body mind and soul and individual is sovereign माने over कौन क्वेश्चन over his body mind and soul and individual is sovereign। तबे देखो respect author regarding action meals and harmful in principles ruled the soul which mankind warrant individuality collectively interfering with the liberty of action any of their members is self-protection and that is the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member civilized community। so, equal freedom and preventing harms others इटा खाली डेफिनेशन तापर आम आसवा देख लिबर्टी डेफिनेशन ऊपर को आसवा। लिबर्टी हैज बीन डिफाइंड सेवराल माने अनेक पॉलिटिकल सेंसेस डिफरेंट क्षेत्र में माने ट्रेडिशनल हैव डिफाइंड नेगेटिव डायमेंशन मॉडर्न राइट्स इज डिफाइंड इट इज पोएटिक फ्रॉम नेचुरली द डेफिनेशन गिवन बाय द ट्रेडिशनलिस्ट एंड नाउ कंसीडर वैलिड माने एटा वैलिड नो पर्पज रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल डेफिनेशन बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी तापर अछि देखो विभिन्न माने थिंकर्स माने ताको डेफिनेशन देछन लिबर्टी इज द ऑपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट माने टी माने उदारवाद होची गवर्नमेंट रो ऑपोजिट आउ गोटे क्वेश्चन जे लिबर्टी इज द फ्रीडम इंडिविजुअल एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंस हिज पर्सनालिटी तापर फ्रीडम इज नॉट एब्सेंस इरा जीडीएच स्कूल क्वेश्चन फ्रीडम इज नॉट एब्सेंस ऑल रेस्ट्रेंट्स अदर सब्स्टिट्यूशन रेशनल वंस फॉर द इरेशनल तापर मैकचिनी क्वेश्चन देखो लिबर्टी इज एक्जिस्टेंस दोज कंडीशन ऑफ सोशल विदाउट मैंने पढ़ी दियो right in society को maintenance केमती करो liberty not mere absence restraints it is positive about doing enjoying thing what is doing and enjoying future बुझिबा बे nature of liberty रो liberty as such is essential condition for the enjoyment of one rights it is not absence restraints just as beauty is not the absence reliance liberty is a positive condition for the enjoyment of rights it admits the presence of such rational which have stood historical experience which meet standard of human reasons summarize future liberty as follow liberty माने देखो लिबर्टी रो इटा मीन्स से सबु प्रतिबंधक को माने एब्सेंट कर दिबो तापर सेकंड पॉइंट देखि लिबर्टी एडमिट्स द प्रेजेंस ऑफ रेशनल माने युक्तियुक्त प्रतिबंधक एवं
एब्सेंस ऑफ इरेशनल रेजिस्टेंस माने माने जोटा कि माने बिना विचार विमर्श रे माने बिना जुक्ति तर्क रे प्रतिबंधक लिबर्टी postulates the existence of such condition in which people can enjoy their rights and develop best selves माने एथिरे कहै सब पीपुल को एंजॉय माने राइट दे जे से माने तांकर बेस्ट देबे लिबर्टी क्षेत्र लिबर्टी इज नॉट लाइसेंस और डू एनीथिंग एवरीथिंग इन्वॉल्व माने सब इन्वॉल्व रे एनीथिंग सब क्षेत्र रे डू डू ओनली दोज थिंग व्हिच आर कंसीडर वर्थ एंजॉयिंग तापर अछि देखो liberty is possible only in a civil society and not in a state of nature or a माने liberty possible only civil society रे and not in a state of nature or a state of jungle state of anarchy can never be a state of liberty liberty is for all liberty means presence of माने प्रचुर अपॉर्चुनिटी देबो माने बहुत अपॉर्चुनिटी देबो तार पीपल रो एन्जॉय देयर राइट्स क्षेत्र रे माने तार अधिकार एन्जॉय करिबारे since liberty is not absence or restraint and it is present only in civilized society law is an essential liberty is not absence देखो civilized society रे देखो law is essential condition of liberty माने law टा लागिबार माने गुटे essential condition माने जरूरी कंडीशन रे उदार बात को माने लागिबा माने स्वतंत्रता क्षेत्र विदाउट लिबर्टी राइट्स डू नॉट हैव ए मीनिंग माने बिना लिबर्टी रे माने तार मीनिंग नहीं माने अधिकारटा नहीं फॉर द लिबर्टी रियली इन्वॉल्व फ्रीडम ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन माने से गुटे सेल्फ रियलाइज करि पारतबा कथा मते स्वतंत्रता स्वाधीनता मिली बोली माने फ्रीडम मिली बोली hence liberty is one of the most fundamental of all the rights माने liberty उटे one of the most fundamental rights of all rights माने सब right अधिकार मिली बार कथा it is the condition of all rights that says liberty always given priority next only to the first priority right of life without liberty there no real life माने बिना liberty रे no real life only and existence in fact involves of eager maintenance of system of rights kinds of freedom देखो liberties involve several of its type forms this can be discussed as follow natural freedom of liberty traditionally the concept natural liberty remain a popular one however now it has lost much of its relevance and support in this way liberty is taken to mean the enjoyment of unrestrained natural freedom and it justify on the ground that sense mean से मैंने एंजॉय करिबार तांको फ्रीडम तांको इच्छा रे ऑल सब रेस्ट्रेंट नेगेट हिज फ्रीडम द सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट हॉब्स लॉक्स एंड रूसो चैंपियन द causes of natural liberty Locke described natural liberty as the most major natural rights of the people held that social contract which signs to protect natural rights Rousseau became famous for arguing man is born free but in chains everywhere he championed the causes of liberty without any restraints the liberty enjoyed by man in the state nature he everything strong protagonist natural liberty had this ideal of माने तांको माने ही लिमिट माने देखो इटा कहे जे ही लैमिनेटेड द चेंज रेस्ट्रेंट्स बाउंड ह्यूमन लिबर्टी इन सिविल सोसाइटी माने तांकर प्रथा पालन रे माने लिबर्टी देइबार कथा देखो इटे कहे जे नेचुरल लिबर्टी कैन लिव माने लिविंग बेस्ड ऑन द एविन प्रिंसिपल्स ऑफ माइट इज राइट द रूल ऑफ मस्कुल पावर लिबर्टी मींस फ्रीडम of action but within limits and without harming the equal freedom of others in society जदि गुटे छुआ को जदि जन्मरू आम जदि बन रे रखिदेबा छाड़ीदेबा ताकू जंगल रे ताले से माने ताकू पूरा पूरी स्वतंत्रता देदेबा ताले से किछि कथा भी कोई जानिबोनी सिविल लिबर्टी माने कोन देखो प्रथा पालन माने जो आमर गोटे गोष्ठी जो प्रथा पालन करती से स्वतंत्रता लिबर्टी हुई इंडिविजुअल एंजॉय मेंबर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सिविल लिबर्टी इट इक्वली अवेलेबल माने इट इक्वली अवेलेबल ऑल इंडिविजुअल एंड ऑल माने सब एंजॉय इक्वल फ्रीडम राइट्स इन सोसाइटी सिविल लिबर्टी इज नॉट ऑल
on the restraints liberty, it is enjoyed only under the restriction, law, rules, tradition imposed by the state and society. Civil liberty consists of rights and privilege which the state created and protect for its subject. ये गेटल क्वेश्चन. Civil liberty is very opposite of natural liberty, where is the letter of denounces of এটা পড়ি দিও ডেফিনেশনটা. দুইটা এক্সপেক্ট সিভিল লিবার্টি देखो फास्ट ला स्टेट गारंटी सिविल लिबर्टी स्टेट गारंटी दीजिए सिविल लिबर्टी क्षेत्र में इट डिफाइन द क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल्स इन वे द माने कैंसिल क्षेत्र में एंजॉयमेंट ऑफ लिबर्टी बाय ऑल द पीपल इट प्रोटेक्ट लिबर्टी ऑब्स्टेकल्स एंड एक्शन ऑफ द मैन एंड ऑर्गेनाइजेशन एच कैन लिमिट द इक्वल माने लिबर्टी इक्वल लिबर्टी ऑफ ऑल प्रोटेक्ट्स लिबर्टी एंड इनेक्टिंग लॉ इम्पोज such restraints which are deemed necessary for the enjoyment of liberty by all. Civil liberty stands for protection of rights and freedom from undue interference by the government. It involves the concept of limiting possibility of a violation of rights of the people by the governments. This ensured by granting and guarantee of the fundamental rights of the people, providing constitutional judicial protection of these. Liberty is never real unless governing can be called account. Is told be always called be account called to when in evidence rights. लास्ट की क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने बुझी सिविल लिबर्टी डिपेंड कहूँ थी करे सोशल एंड इक्वल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन स्टेट इंटरेस्ट एंजॉय ऑल राइट्स व्हिच आर प्रोटेक्ट अपहोल्ड द लॉ एंड ट्रेडिशन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इक्वल ट्रेडिशन एंड इक्वल सिविल लिबर्टी एंड राइट्स दिया टिके फास्टली डिस्कसन करने को होची बहुत लंबा वीडियो हो तो देखो पॉलिटिकल लिबर्टी फ्रीडम राजनीतिक उदारवाद माने स्वतंत्रता द अपॉर्चुनिटी एंजॉय इक्वल्स एंजॉय पॉलिटिकल राइट्स बाय द पीपल डिफाइन पॉलिटिकल लिबर्टी व्हेन द पीपल हैव द फ्रीडम ऑफ पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस माने से माने पॉलिटिकल प्रोसेस रे पार्टिसिपेशन कर परिबे से मनको फ्रीडम दिया जाइछि इट इज हेल्प द एंजॉय पॉलिटिकल लिबर्टी इरा माने एंजॉय कर परिबे से माने पॉलिटिकल लिबर्टी दिस टाइप ऑफ लिबर्टी इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ सब राइट्स पॉलिटिकल राइट्स एज द right of to vote, right contest election, right to hold office, right to criticize, oppose and policy of the government, right from political party interest groups and pressure groups, and the right to change of government. माने से government will change कर भाई constitution means last की observe करने political liberty means से power to active and affairs of the state. Leacock uses name of constitutional liberty describing the political liberty. देखो तापरे आसिला individual और personal liberty freedom. Individual liberty means the freedom of pursuing one desires interest man tar इच्छा तार interest person but which not clash with interest desires of freedom speech expression freedom of residence freedom of movement freedom of conscience freedom of taste pursuits freedom of choose and profession of trade of occupation and of the freedom of enjoy fruits of labor the rights freedom profess देखो religion freedom express आइडियोलॉजी माने गोटे पीपल को तार पर्सनल लिबर्टी देबार डिफ्री तापर इकोनॉमिक लिबर्टी फ्रीडम लास्ट की डिफाइन इकोनॉमिक लिबर्टी एज फ्रीडम फ्रॉम द वांट्स ऑफ टुमारो एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द एबिलिटी ऑफ एंजॉय एट लीस्ट द 3 बेसिक मिनिमम नीड फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर बाय इकोनॉमिक लिबर्टी जार मीन है अपॉर्चुनिटी रिजनेबल सिग्निफिकेंस इन द अर्निंग ऑफ एन डेली ब्रेड इटा लास्ट की क्वेश्चन इट कैन बी एंजॉय देयर फ्रीडम फ्रॉम हंगर स्टारवेशन डिस्ट्रक्शन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द इट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ इज ए सोसाइटी पॉजिटिवली इट मीन्स एबिलिटी ऑफ द राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग वंस लाइवलीहुड पोस्टलेस फ्रॉम वन फ्रीडम फ्रॉम फियर हंगर स्टारवेशन एंड डिस्ट्रक्शन देखो ये कही and without economic liberty and political liberty becomes a meaningless because when the people not free from fear hunger starvation and destruction they can be never even thinks of enjoy their rights and freedom तापर national liberty देखो national liberty is another name independence of the nation माने national liberty रो माने तार अलग हिसाब से बुझा तार माने इंडिपेंडेंस ऑफ द नेशन
It denotes that the people nation have freedom to have a constitution of their own, মানে to have a constitution of their own, to organize their own government freely and adopt any form of government, to pursue independence in foreign relations through the formulation and implementation and independent foreign policy, freedom from external and control policy to 1947 independence from British imperial rule ଆମେ ମୁକ୍ତି ହେଲା, free country, people of India became this new word the national liberty. National liberty means କାଣ every man everybody of man on earth possesses the right to self government. ଜେଫରସନ୍ କହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିବର୍ଟି ମାନେ ଏଇଟା ତାର ମିନ୍ ସେ absolute liberty in contemporary times nation is subject to the rules of international law, demands of the world's public opinion, rules international morality and limitation nature interdependence of all the nations, moreover several sovereign and enjoying national freedom and themselves living in era of economic dependency upon economics and new colonialism ମାନେ अनौपनिवेशवाद सिचुएशन ମାନେ इंडिपेंडेंस बॉड इकोनॉमिक्स दुईटा लिबर्टी अच्छी देख फास्ट है रिलीजियस लिबर्टी जार मीन्स है प्रोफेस नॉट प्रोफेस एनी religion is includes freedom of faith and worship, non-intervention of state religious affairs of the people. It either mean equality of all religions of free carry out their activity in society. Moral liberty कौन it means freedom to act according to one's conscience. It stand for the liberty to work for securing moral profession, freedom to pursue moral value is moral freedom. Thus तापरे अच्छी फ्रीडम ऑफ बिलीफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डिसेंट फ्रीडम एसेंशियल एडवांस इन फ्रीडम ऑफ बिलीफ्स एक्सप्रेशन एंड डिसेंट फ्रीडम ऑफ बिलीफ और फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी टू फॉलो एच हिच रिलीजन एंड बिलीफ्स राइट्स to religions and freedom includes freedom of belief faith माने विश्वास individual and community manifest religion teaching preaching worship and change religion by free will and not under coercion international convention civil rights and explanation article right is right believe in religion follow तो देखो तार पॉइंट माने बुझिबा एबे everyone shall have the rights माने समस्त को दिया है राइट टू फ्रीडम थॉट ए कॉन्साइंस रिलीजन दिस shall include freedom to have the adopt religion माने किए जे जो भी रिलीजन एडप्ट कर पाए जो धर्म बिलीफ ऑफ चॉइस एट फ्रीडम इधर इंडिविजुअलिटी कम्युनिटी विथ अदर्स पब्लिक और प्राइवेट मैनिफेस्ट माने रिलीजन इज बिलीव इन वर्शिप ऑब्जेंस ऑफ प्रैक्टिस एंड टीचिंग माने से रिलीजन को नहीं टीचिंग भी कर पारिबो नो सेल बी सब्जेक्ट क्वेश्चन व्हिच ओल्ड imperich her freedom to have or adopt a religion or belief of his choice her choice freedom to manifest one's religion or belief may be subject only to such limitations are prescribed by law are necessary to protect public safety order health morals of the fundamental rights and freedom or others state parties to present covenant undertake to have further respect liberty of the parents and when applicable legal guardians to ensure the religious and moral education of their children conformity with their convictions तब देखो condition essential for enjoyment of freedom of safeguards liberty होची most valuable position our माने आम पाई it most cherish rights of free men and women माने इटा most cherish free मुक्त माने मेन हो कि वुमेन नेचुराली माने प्रकृतिगत भाव में इटा गोटे माने लिबर्टी दरकार आमको अवेलेबल और प्रॉपर वे रे चलवा कथा ई फुल मेजर्सटा फॉर दिस पर्पज वी नीड सर्टेन सेफगार्ड्स अगेन एनी वायोलेशन ऑफ लिबर्टी बाय फेलो द मैन एंड वुमेन द सोसाइटी एंड स्टेट एंड इट्स गवर्नमेंट माने कैंसिबल क्षेत्र में सेफगार्ड क्षेत्र में वायोलेशन हेले लिबर्टी आवर फेलो मैन एंड वुमेन द सोसाइटी एंड द स्टेट एंड इट्स गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एसेंशियल सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी तापर लॉ फॉर लिबर्टी
The first major safeguard of liberty is the love for liberty. ମାନେ safeguard liberty is the love for liberty. Only when people mentally in love with liberty, with have a passion of liberty, and they realize in full measures the absolute importance of liberty, that liberty can really safeguards liberty. Love for liberty ensure continuously attempt on the part of people and enjoy defend their liberty. Eternal vigilance. The commitment of the people continuously defend their liberty and their full alertness against ମାନେ alert ହେଇକି ରହିବାର କଥା ସେମାନେ ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ସତତ ଜାଗୃତି ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ରକ୍ଷା କବଚ। ଯଦି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ଥିବା ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ କିଏ ଛିଡ଼େଇ ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ମାନେ ଫ୍ରିଡମକୁ। People must remain continuously vigilant against every attempt to people folders energy upon their liberty. Eternal vigilance, the price of liberty. The people should be prepared to tirelessly pursue freedom through every kind of peril hardships. This can be best safeguard of liberty. देखो जवाहरलाल नेहरू गुटे डेफिनेशन दीछन लिबर्टी इज ए peril preserves without with your blood माने लिबर्टी आमर माने रक्तर गोटे माने अधिकार मध्य कवरेज एंड कमिटमेंट एनंग विथ अलर्टनेस एंड एबिलिटी एसेंशियल सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी तापर लास्ट की क्वेश्चन देखो इट इज द प्राउड स्पिरिट ऑफ सिटीजन लेस द लेटर ऑफ लॉ इज द मोस्ट रियल सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी लास्ट की क्वेश्चन नो कंट्री कैन रियली डिफाइन द फ्रीडम अनलेस द पीपल थ्रू द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट कीप देयर गवर्नमेंट विजिलेंस देखो the grant of equal rights of all for safeguarding liberty it is essential that in society there should be no privileged class of persons. Liberty can exist only when equal rights are granted and guarantee all classes people without any discrimination. Grants of special privilege and rights to any class is always against the spirit of liberty. Privilege class if present is bound to limit freedom of others safeguarding interest for the not privilege. माने डिस्क्रिमिनेशन को प्रोटेक्ट करिवो हैव अ स्टैंड फॉर नेचुरल डेमोक्रेटिक पॉलिटी कोन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स माने इज एन एसेंशियल और सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी क्षेत्र में माने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एस्टैब्लिश कराइबार कथा. Both liberty and democracy are supplementary and each others. We cannot conscience of democratic politics without the presence of civil economics, political and individual liberty. The absence of rights of freedom, there can be no real democracy. The presence of a democratic political system ensures a guarantee of liberty, and liberty and democracy are interrelated and supplementary each of condition of others. Liberty needs protection not only the state and the rulers but also from the society and the majority. The right of one should not be dependent upon others. Economics liberty. Whilst discussing of safeguard of liberty, Lasky suggests that the state must ensure that rights and freedom of some people should not be dependent upon the will and happiness of others. The rulers and the ruled should both be under the rule law. The right some to earn their livelihood should not be entirely dependent on others. माने without economic liberty there can be no liberty. माने economic liberty बिना कैसे भी liberty होना गोटे real liberty नहीं. Unbiased government action for safeguarding liberty is essential. That conditions should be exercised and unbiased and impartial controversy everyone section of society. सब क्षेत्र रे all activity and deals must be transparent. The government but also responsible, accountable. But before this is a very essential safeguard liberty because power holders can be biggest violator of the liberty of the people. Protection of fundamental rights. The fundamental rights one of the key method of safeguarding liberty is incorporate a charter of fundamental rights and freedom in the constitution of state along with its judicial protection should be given to rights on an independent judiciary should be established and given the power to protect rights and freedom. तापर देखो इथे कहि छी
The power judicial review as well as power to issue writs and protecting the fundamental rights should be given to judiciary. Independence of judiciary kono independence should be assigned responsibility to protect the right to freedom HL others rights of the people for discharging such an important function. The judiciary should be made an independent and duly empowered. Only an independent judiciary can protect the rights and liberty of the people against encroachment for making. देखो कहले only highly qualified legal luminaries experienced persons should be appointed judge and judge salary and parks goods pensions and retirement median condition service security method removal judge should be made difficult. Separation of power देखो along with independence of judiciary separation of power should be effected between the legislature and executive माने effect करे any concentration of combine of this power dangerous for the liberty of the people because it lead to misuse of power. Powerful organs in fact each माने due to powerful organs of the government keep separate and along with the should be given second power of the other. Decentralization power माने the decentralization power of safeguarding liberty against possible dictatorship or authoritarianism. Essential decentralization power should be organization of government. This power government particularly exclusive branch distribute among a number of organizations. All three levels of government local, provincial, regional and national are decentralized power always guarantee against misuse arbitration. Decentralization power माने विकेंद्रीकरण पावर आमर जेमिति मु जदि धरबी पंचायती राज को जदि धरबा ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद म्युनिसिपालिटी को जदि धरबा म्युनिसिपल एनएसी म्युनिसिपालिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमती माने गोटे पावर शेयर कराई माने विभाजन होई. रूल ऑफ लॉ ऑल द पीपुल द स्टेट शुड बी एंजॉय इक्वल राइट्स माने इक्वल राइट्स एंजॉय करि पारे फ्रीडम अलोंग विथ इट शुड बी अंडर same law and bound by some types of obligation. No one should be placed above law, should ensure and conducive liberty and rights of all. Political education and enlightened citizenships for safeguarding liberty. It is essential that people should be duly educated and enlightened. They should be fully aware of their rights and freedom as well as enlightened enough to judge the dangers to the liberty. They should have the knowledge of the means available to them safeguarding their liberty. They should be also be fully prepared to defend demonstration. Well organized interest groups and non-government organizations one very essential safeguard of liberty is the presence of well organized and active interest groups and non-governmental organizations or voluntary social service organizations through the people can act in organized way to full violation and threaten violation. देखो अब टिके अच्छी बुझी दाऊ does law help for hinder freedom of liberty wrong and suitable view माने देखो law limits freedom the negative view the individualist माने anarchist syndicalist the view the law limits liberty law impose restraints माने आइन को भी प्रतिबंधक एवं स्वतंत्रता एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट. Therefore law also limits liberty more laws or less. देखो पढ़ी दियो law केमिति create about freedom and more the laws and freedom the wrong view extreme view. इतकी तला वीडियो तो really bye bye. Thank you.